Chief Akhilesh Yadav had confirmed that the seat-sharing talks were on track, and by 5 p.m. this evening, the announcement was made. गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। अंत भला तो सब भला। All right, let's break it down for our viewers. I want to bring in Maushmi Singh, my colleague live from the national capital. She's been tracking the Bharat Jodo Yatra and, of course, the alliance which has now been inked, as well as Samarth Srivastava reporting from Lucknow. Maushmi, coming to you first. The 17 seats that the Congress has managed to get in this alliance, finally, before we get to what those seats are, can you take us through on what led to an alliance which was practically on the brink of collapse, now to be announced this evening at 5 p.m.? Right, Preeti, as you also broke that news that it was finally Priyanka Gandhi Vada who acted as the chief troubleshooter for the Congress party. She spoke to Akhilesh Yadav yesterday and even today, even as the congressmen and women were running out of patience as far as, the delay in the alliance is concerned. The UP unit was questioning the leadership that why we could not seal it. Because this time round, the Congress sources said that the Congress leadership wanted a respectable formula, not the leftovers, difficult seats to fight, and unwinnable seats, what they are called. So, having learned from the past alliance with the Samajwadi Party, Priyanka Gandhi Vadra, in fact, mediated in between, spoke to Akhilesh Yadav yesterday and today, and then actually the entire pact was brokered. But importantly, the underlining factor is that the India bloc really feels that this is that big moment for the India bloc, finally, after multiple failures, Preeti. All right, you're right, Maushmi, because if this had not worked out, then practically there would be no India bloc. It would have been the UPA of what it was earlier. But I want to bring in Samarth. Maushmi, stay with me as well. But Samarth, can you take us through what are those 17 seats? What were the sticking points? Because clearly the Congress went back and forth on a few seats, and then, the deal was inked. Give us the names of those seats. Well, exactly, Preeti. I'll read out the names because I'm present at a place where that joint press conference happened. We saw Naresh Uttam Patel, we saw Ajay Rai, all were here in the press conference, and the names are Rae Bareli, Amethi, as we know that these were the seats that Samajwadi Party always leaves for the Congress Party. And after that, we saw Fatehpur Sikri, Basgaon in the Gorakhpur, and it's Prayagraj, Saharanpur, Maharajganj, Banaras, Amroha, Jhansi, Bulandshahr, Ghaziabad, Mathura, Sitapur, Barabanki and Devariya. What is interesting is Varanasi, because we saw Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav announce the candidate from Varanasi yesterday, and hours after the talk between Priyanka Gandhi Vadra and Akhilesh Yadav, things changed gradually, and Akhilesh Yadav clearly backed out his candidate from Varanasi, what Rajendra Choudhary clearly told India Today TV, because Akhilesh Yadav was quite unhappy with the delay in the seat sharing, and that's why we were getting the reports that there could be another breakup in UP in terms of alliance, but it did not happen because talks happened. Well, he kept the pressure tactics going, and it seemed Priyanka Gandhi was the troubleshooter and all. I'm going to get in Maushmi back into this conversation again. Maushmi, there are two ways to look at it. One, that the Congress, which only had one seat in 2019, now has 17 seats where they're in alliance. But having said that, the other way to look at it is that there might be, these big ticket seats in terms of Kanpur, in terms of, the other seats that Samarth told us. But the question is, these are seats where the SP has never quite won. So are these hand-me-downs? How is the Congress taking it? The SP would like to believe that it is the most formidable player as far as, the entire spectrum of political parties is concerned, leaving the BJP. And that's one reason that it has a winnability factor everywhere. There were only some tricky ego clashes on certain seats, as you mentioned. And Banaras being one of those, Varanasi being one of those. Again, Mathura and Bagpat. Congress ideally didn't want that with Jayant Choudhary switching over to leaving the India.
All right, Moshmi, we've lost you there. All right, both of you, thank you for joining us, Samarth and Moshmi, with the latest there. We're going to keep a keen eye and the detailing of these seats. But for now, what was in 2018, which was a state election run under the banner of UP ke ladke, they are back for 2024 UP elections. It remains to be seen how the showing is this time, because 2018 was abysmal. With that, I want to quickly cut into the latest news break that's coming in. All right, while the Samajwadi Party and the Congress have figured out their seat-sharing alliance, the other ally, Aam Aadmi Party, well, the seat-sharing with the Congress is now on shaky grounds, we are being told. Arvind Kejriwal has admitted delay in alliance talks, says don't know when the alliance will be declared. We look at the next day or two, but it's getting very late. It's too late. Is the AAP Congress Delhi alliance on the brink of collapse? That's the big question. Listen in. देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो सर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। कल घोषणा हो देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो सर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना। All right, let's quickly cut across to Mamata Banerjee now speaking up on the Khalistani comment that was allegedly made by BJP yesterday when one of the teams of the BJP led by Suvendu Adhikari was making its way to Sandesh Khali. The Bengal Chief Minister has reacted saying there is a conspiracy going on to tarnish Bengal's cultural image. What was the fault of a Punjabi officer? He was doing his duty. There are Punjab regiments in force. We respect all religion. How you can call a Punjabi person wearing a turban Khalistani? There are many Muslim IPS officers. Can you call them Pakistani? একটা পাঞ্জাবি অফিসার কি দোষ ছিল তার? সে ডিউটি করছে। ফোর্সে পাঞ্জাবি রেজিমেন্ট নেই, গোর্খা রেজিমেন্ট নেই, হ্যাঁ বাঙালি রেজিমেন্ট নেই, যদিও সবচেয়ে বেশি আন্দোলন বাংলার লোকেরা করেছিল। সব ধর্মকেই তো আমরা ভালোবাসি, তাহলে তুমি একটা পাঞ্জাবির পাগড়ি পরে বলে তুমি তাকে খালিস্তানি বলে দেবে? কত মুসলিম অফিসার আজকে আইএস আইপিএস আছে, ডাব্লিউবিসিএস আছে, তুমি একটা মুসলিম অফিসার দেখে তাকে পাকিস্তানি বলে দেবে? আমাকে তো কতবার কত নামে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, আমি নিজে এগুলোকে মানামানি করি না। দু একজন হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে, সবচেয়ে বড় কলঙ্ক বাংলার, যারা বাংলাকে কলুষিত করছে, কলঙ্কিত করছেন, পর্যুদস্তিত করছেন, লাঞ্ছিত করছেন, অত্যাচারিত করছেন, তাদের আমি বলি আগামী দিন ভালো থাকবেন। আপনারা আমাদের খারাপ চাইলেও আমরা কিন্তু আপনাদের খারাপ চাই না, কিন্তু বাংলার অধিকার মর্যাদা কি করে রক্ষা করতে হয় এটা আমরা জানি। আমরা মাথা নত করতে জানি না, আমরা মাথা উঁচু করে চলি। Banerjee viewers reacting to what happened yesterday with the gruesome detailing of what is going on in Sandesh Khali. BJP unit delegation was making its way led by Suvendu Adhikari. At that point of time, they were stopped by the West Bengal police, and the officer in question then alleged that statements were being made by Suvendu Adhikari that he called the officer on duty a Khalistani. At the back of it, a massive political row has exploded, viewers. Mamata Banerjee jumping in and attacking the BJP on how can anyone call an officer in uniform just because he was wearing a turban Khalistani. BJP in turn has denied any of these rumors, viewers. They made it very clear that furnish proof that Suvendu Adhikari ever said or called the officer on duty a Khalistani. We're going to continue to get you more on that, but let's quickly move on in the bulletin. Now,
Moving on to Sandesh Khali, the showdown continues to escalate. Suvendu Adhikari entered Sandesh Khali yesterday and visited the houses of allegedly affected women in the violence-hit area. Today, the focus has shifted on alleged Khalistani comment on a cop rather than finding the absconding TMC Neta Sheikh Shah Jahan. This is what the BJP says. They say there is an attempt by the TMC to shift focus and make it about the Khalistani comment and less about what went down in Sandesh Khali. But viewers, if you look at it, both are very different and both need to be viewed with extreme seriousness. At one end, if Sandesh Khali and the incidents that have been elaborated by the women there are true, and some of them, even if for the BJP or the TMC alleges come from the BJP, even if they do, why aren't they being investigated? And that's a serious question, and that needs to be investigated. On the other hand, was a statement made against the Sikh officer in uniform. That too needs to be taken seriously. Bengal's crying shame. The exploited women of Sandesh Khali from backward communities, allegedly gang raped, assaulted by aides of local TMC strongmen. আমাদের সাথে যে অত্যাচারগুলো হচ্ছে নারী ওই মেয়েদেরকে ডাকতো শিবু হাজরা আর উত্তম সর্দার, আর ওদের তো মাতা শাহজাহান শেখ, উনি যা বলতেন এরা তাই করতো। এই তো বাড়িতে এসে হামলা চালাচ্ছে, বাড়িতে এসে খোঁজ খবর নিচ্ছে, তুই টাকারি করে অশ্লীল ভাষায় হচ্ছে আমাদেরকে ইঙ্গিত করে ডাকছে। কোনো পুলিশ অফিসাররা তো এরকম করতে পারে বলে আমার জানা নেই। এগুলো পুলিশের ভেষেই অন্য কেউরা আসছে, শাহজাহান শেখের বাহিনীই আসছে। Sheikh Shah Jahan, himself accused of laundering and criminal assault, absconding for close to 50 days now. The BJP, which managed to meet the survivors after the High Court nod, hit back hard at Mamta, accusing her of turning a deaf ear to the plight of women. क्या छुपाना चाहती है ममता जी और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? আমার জমি আমি পজিশন নেব, কাল থেকে নিয়ে নিতে। উত্তম জেলে, শিবু জেলে। আজকে হাইকোর্টের নির্দেশের পরে শাহজাহানকে মমতা ব্যানার্জিরও 14 গোষ্ঠী বাঁচাতে পারবে না। But the TMC, silent on Sandesh Khali, tried to turn the tables on the BJP using this outburst by a turbaned Sikh cop whose video Mamta shared, accusing BJP leaders of hurling the Khalistani jibe. पुलिस को बोलिए, आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हैं। आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हैं। क्यों बोला खालिस्तानी? यहाँ पे आके जो लोग बोलते हैं कि पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ that this is your good fortune that this is Bengal police. वरना जिस तरह से आप लोग ड्रोन के साथ टीयर गैस लगा के उड़ा रहे हैं, हमारी पुलिस अगर चाहे तो वो भी कर सकती थी। ये तो शुभेंदु अधिकारी, ये तो इंसल्ट किया है, पूरा सिख लोगों को इंसल्ट किया है। एक आईपीएस रिस्पॉन्सिबल आईपीएस ऑफिसर, उसका माथे पर पगड़ी था, वो देखकर खालिस्तानी बोल दिया। ये तो वो लोग पूरा अपोज कर रहा है। हमारा चीफ मिनिस्टर, पूरा पार्टी, हम लोग तो कंडेम किया है। जो हमारे सिख बंदे का संग गलत टर्बन को लेकर गलत हुआ है, उनके लिए उनके जो अधिकारी है जिन्होंने किया है वो माफी मांगे। The BJP, however, accused Mamta of using a doctored video to shift the glare from her shield to the Sandesh Khali villains, daring Mamta to order a forensic test of the clip. আমি সুপ্রিম সরকারকে বলবো 24 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, আদারওয়াইজ I will take legal action against you. Did BJP netas use a vile abuse on a uniformed cop? Or is the Mamta government merely using this ploy to divert attention from its Sandesh Khali failure? Bureau Report, India Today. Once again, viewers, with the heinous anecdotal evidence that is emerging from Sandesh Khali, if it's true, then Mamta Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, needs to be held accountable. On the other hand, if a man in uniform wearing a turban was called Khalistani, then that also
needs to be accounted for and who made those comments. With that, I'm going to go into a quick break. To stay with us on the other side. To the point. Business Today salutes India's finest corporate achievers. We celebrate innovative strategies for resilient and sustainable businesses in a fast-changing world. From mid-sized to unicorns, from new entries to lifetime achievement awards, be a part of an event where excellence meets inspiration. Join us in honoring the trailblazing titans of India Inc. at Business Today Mind Rush and the Best CEO Awards. Big win for Aam Aadmi Party and Congress alliance in Punjab. The Supreme Court on Tuesday set aside the results of the Chandigarh mayoral elections declared on January 30th. The top court declared that Aam Aadmi Party candidate Kuldeep Kumar as the new mayor of the Chandigarh Municipal Corporation. A three-judge bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud held that returning officer Anil Masi made a deliberate effort to deface 8 ballots cast in favour of Aam Aadmi Party's mayoral candidate. The court went on to say that presiding officer unlawfully altered the course of the mayor election and held him accountable for expressing a false statement in front of the court. The apex court said that it was not quashing the entire electoral exercise and restricting itself to dealing with wrongdoings in the counting process. Aam Aadmi Party's mayor Kuldeep Kumar hailed the Supreme Court verdict as a victory of democracy. Aam Aadmi Party and Congress termed the decision a win for India Alliance, which for the first time came together in an election. इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। 3 Aam Aadmi Party councillors defected to the BJP this week, bringing down the India bloc tally. BJP councillor Manoj Sonkar too had stepped down as mayor. If the BJP will make another bid for power remains to be seen. It's now about some myths around cervical cancer. First of all, cervical cancer is hereditary. That is a myth. It isn't hereditary at all. It is caused by a virus that infects an individual and isn't something that gets passed on through the generations. Patients of cervical cancer cannot become pregnant. That again is false. Patients suffering from cervical cancer can recover during the course of the treatment, can let their ovaries be set aside during radiation, and once they are out of the situation, they can conceive. There are several fertility treatments available for them. Another myth associated with cervical cancer is that you need to get an HPV and a pap smear test year after year. That isn't correct. Once in 3 years is good enough once you are clear. Also, there is a myth that multiple partners, people who have multiple sexual partners, are the only ones getting cervical cancer. Well, that definitely increases your risk. However, many people with single partners also get cervical cancer.
चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः पांचवें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। Armed with facts, she takes the news by its horns. You think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories from every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Kisan cause booms again. Government farmer stocks break down. (21st February) clarion call for Chalo Delhi. Punjab-Haryana border bolstered. Farmers prepare to push through. Now, apart from a Pockland machine, a JCB
is also on standby. Remember, these are all heavy duty machines that are actually used to clear non-motorable roads. So this is the way the farmers are intensifying their preparations here at the Shambhu border. Haryana police ready to repulse. Cement blocks, trenches dug, tear gas shelling. Now what you see are constant tear gas shelling that is happening here at the Shambhu border. I'll ask my cameraman to pan the drone. Look over there, the drones that are being used to actually drop the tear gas shells. Just before the face-off between cops and farmers, government offers fifth round of talks. हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें. Farmers now to decide on talks. Kisan Kranti 2.0. Talks or Chalo Delhi. Let me quickly take that question to my colleague Shreya Chatterjee, who is joining us right now from Shambhu border. Shreya, the ball now in the farmers' court, the government offering a fifth round of talks. Are we expecting a press conference soon by the farmers who've made any decision at all, whether they're going to go ahead for talks or continue to Chalo Delhi? Preeti, we need to understand that what really transpired here at the Shambhu border today. Now, the farmers were attempting a march is when they got that message from the government that the government is ready for a fifth round of talk. Post that, the farmers held a meeting. As per the sources that we have learned, the farmers will put forward before the centre that if the centre agrees and gives it in confidence that they are ready to discuss on the MSP as a guarantee, only then they are ready to sit, and they also need a clarity on the time and the location where they will be holding this particular meeting. So that is what they were looking forward to say. We are yet to get an official word. Why? Because, they have to take everyone in confidence. There are a certain group that is protesting at Shambhu. The farmer leaders have now gone to the Kanori border. They are actually going to take inputs from them, and then they will actually come forward on what everyone has agreed. So looking by that, maybe by tonight or early tomorrow morning, we'll get a clarity. As of now, even if it's not official, the Delhi coach seems to be on a hold as of today. Well, there are lots of unconfirmed reports coming in, Shreya. We don't want to get in that because we don't want to heighten the tension, only put out the factual information which is right now above board. But having said that, what is the ground situation right now? Are things in control? Tense, clearly. But are things in control? Are the farmers looking to escalate the situation or trying to boil it down? Preeti, I can corroborate what has happened here at Shambhu today. The visuals may obviously look like it is tense. It is indeed in a difficult situation because it's a roadblock, but we can say that this was a quid pro quo sort of that was being maintained since the last few days. When the farmer leaders in the first half at 11 wanted to move forward, we saw tear gas shells being fired. When these farmer leaders went back to discuss whether they will agree the centre's proposal, we know that there are the frontline people who are really the youth who are actually at the front of the protest. They get agitated. They do not want to wait for a long time, and that impatience has seen in them moving forward and suggesting reckless activity towards the Haryana police. That is why they have responded with tear gas shells. And we have also seen when drones flew, from kites to firecrackers, all sort of measures were used by the farmers here at Shambhu border. So nothing really went out of hand or untoward, because the farmer leaders and some of the farmers we spoke with also say that they also want an amicable solution. If the centre can talk on what they want, they would want it that way.
Well, let's just hope that actually really happens and, there is a ceasefire literally with what we're witnessing. Appreciate you joining us, Shreya, with the latest update, joining us from Shambu border. Let's cut across right now to farm leaders and get a sense on what we can expect in days to come. Choudhary Savit Malik, National President, Kisan Union, joins us. He's with the agitation. Yashovardhan Azad is a former IPS Special Director, Intelligence Bureau. A lot going down in terms of security, in terms of law and order. You might have seen a lot of discussion on that as well. We are also joined at this time by Ravindra Singh Sharon. He's a senior journalist. He's also going to be joining us. But I want to cut across first to Choudhary Savit Malik. Choudhary Savit Malik, अब सरकार ने 5वीं राउंड की टॉक्स ऑफर की हैं. क्या किसान ये टॉक्स एक्सेप्ट करेगा और ये सीज फायर जो चल रहा है कंटिन्यू रहेगा कि नहीं? प्रीति जी, हम हमेशा बातचीत करना चाहते थे, आज भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत कैसे हो? एक तरफ तो सरकार बातचीत का निमंत्रण दे रही है, दूसरी तरफ कीले गाड़े हैं और अभी एक दुखद घटना आई है, खनौरी बॉर्डर पर एक युवा की गोली लगने से सर में मौत हो गई है। साबित मलिक जी, अभी तक वो पुख्ता खबर नहीं है, तो मतलब बेहतर होगा कि हम वो नेशनल टेलीविजन में जब तक कॉन्फर्मेशन कुछ आती है क्या हुआ तभी बात करें, तो इसको रहने देते हैं। अगर आप हमें बता सकते हैं कि आगे क्या प्रतिक्रिया है फार्मर्स की, कि जो भी वायलेंस हुआ है जैसे ही कंफर्म रिपोर्ट आएगी हम जरूर लेंगे, पर आप ये बताएं कि क्या अभी जो फार्मर्स हैं क्या टॉक्स के लिए जाएंगे? 5वां राउंड है, ऑफर किया है सरकार ने, या चलो दिल्ली की तरफ ही है? नहीं प्रीति जी, किसान हमेशा बातचीत करना चाहता था, आज भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत ठोस तरीके से हो। अगर दिल्ली के लोग आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, वो कोई ठोस रणनीति लेके आए, ये ना आए कि भाई टाल मटोल करके बहका कर हम आंदोलन को समाप्त करके चले जाएं। अब इन्होंने जो 5 फसलों पे एमएसपी की बात रखी थी, आपको मैं बता दूं कि उन पर ऑलरेडी एमएसपी से ज्यादा रेट मार्केट में मिल रहा है, तो उन पर तो ये एमएसपी देना चाहते हैं, लेकिन और हमारी जो फसलें हैं जो एमएसपी पे कम बिकती है, उन पर एमएसपी देने की बात क्यों नहीं कर रहे? और उन पे भी कह रहे हैं कि हम 5 साल के लिए गारंटी करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का मन ये है कि किसान को बहलाकर फुसलाकर उसको आंदोलन समाप्त किया जाए, लेकिन ये हित में नहीं है। और हम चाहते हैं कि किसान की जो जायज मांग है उनको पूरा करें। आप किसान का कर्जा माफ करें, सारे मुकदमे वापस ले और एमएसपी पे गारंटी दे। और हमारे पैनल में कृष्णवीर चौधरी जी हैं, हमारे सीनियर है काफी, मैंने इनका कल लेख पढ़ा, कई अखबारों में आया, इन्होंने भी कहा कि हाँ, जो गारंटी है उसको ये कर दिया जाए कि उससे कम अगर कोई खरीदता है तो सजा का प्रावधान हो। तो ऐसा नहीं है, जो सीनियर लोग हैं जो किसान हित में काम करते हैं सब इसको समझ रहे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने बॉर्डर बना दिया है 2 देशों की तरह और एक स्टेट को बिल्कुल भारत से काटने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। किसान शांतिपूर्वक पंजाब से चले थे, आना चाहते हैं, कोई किसान गड़बड़ नहीं कर रहा, लेकिन सरकार ने एक उनको बदनाम करने के लिए हवा बना दिया। दिल्ली में कोई किसान नहीं आया, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए सारे बॉर्डर बंद कर दिए। अरे वो पंजाब से हरियाणा में तो घुस नहीं पा रहा, दिल्ली में आपने चारों तरफ जाम लगवा दिया ताकि किसान के प्रति एक नेगेटिव बने, किसान को लोग बदनाम करने का काम करें। ऐसा नहीं है, किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से आगे भी करेगा। कृष्णबीर चौधरी जी, क्या कहेंगे आप कि जो अभी 5वीं टॉक्स गवर्नमेंट ने ऑफर की है, अब जो किसान यूनियन का कहना है कि देखिए एमएसपी पे बात करनी है तो करिए, वक्त जाया ना करिए? प्रीति जी, देखिए, हर समस्या का समाधान बातचीत से ही हल निकाला जाता है। अभी जो पंजाब की एमएसपी की खरीद रही है धान की और गेहूं की, वो तो सारा 100% के करीब जो है, जो खाने में प्रयोग होता है उसको छोड़ के सारा तो एफसीआई खरीद रही थी। अगर हम वहां की स्थिति की बात करें तो पानी की क्या हालत हो गई है आज वहां। फसलों को बदलाव बहुत जरूरी है और सरकार ने पंजाब के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के पैटर्न को बहुत लंबे समय से हम लोग बात कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि क्या किया जाए पंजाब को, कैसे बचाएं पंजाब को। तो उसी के लिए मक्का, कपास और अरहर, उड़द और मसूर, दलहन बहुत जरूरी है और कपास और मक्का का
पिछले समय मक्का की शिकायत थी कि साहब मक्का एमएसपी से बहुत कम पे बिकी पंजाब के अंदर, तो उसके लिए चूंकि बायोफ्यूल क्रॉप उसको यूज करा जाएगा। अब मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से खड़ा करके सरकार ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाया है। एफपीओज को इसलिए बनाया है कि किसानों के उत्पादों को वो एमएसपी से ज्यादा पे खरीद के और उसको कंज्यूमर तक मुहैया करे। दूसरा, जो पैक्स हैं इस देश में 67,000 से ज्यादा पैक्स हैं, उन सबको एक्टिवाइज इसलिए कर रही है सरकार, उनको गोडाउन बनाने के लिए फंडिंग कर रही है सरकार कि वो किसानों से गांव-गांव में खुद एमएसपी से ज्यादा पर खरीद करे और वो कंज्यूमर को मुहैया करे। क्योंकि कोई भी सरकार, मैं बहुत स्पष्ट मत मेरा रहा, कोई भी सरकार इतने बड़े उत्पादों को खरीद के क्या करेगी, कहां ले जाएगी। अब आता है बाजार की स्थिति। जो साबित मलिक जी तो कह रहे हैं ना, किसान तो कह ही नहीं रहे हैं कि सरकार खरीदे। जी, उनका तो यही कहना है, किसानों का भी यही कहना है कि हम कहां कह रहे हैं कि सरकार खरीदे। मैं बोलिए। प्रीति जी, मेरा मत बहुत स्पष्ट है, मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा कहना यह है कि किसानों को बाजार से दूर रखा गया तभी तो शोषण हुआ है। अगर किसान बाजार में खड़ा होता तो उसका शोषण नहीं होता। अगर वो कोऑपरेटिव मूवमेंट में पहले से इतनी तेजी से आगे बढ़ता जितना अब तेजी से काम शुरू हुआ, तो आज वो बाजार में मालिक होता। आज बाजार में जब किसान की फसल आती है तो उसके भाव गिर जाते हैं। ये सच्चाई है कि कई बार तिलहन में भी गिर गया, कई बार दलहन में गिरा, मक्का में गिरा, और ऐसा चने में इस बार गिरा। जो तीन तो मेरा सुझाव ये है, वो तो उसी की बात करें जी। मेरा सुझाव प्रीति जी सुन लीजिए, अगर ये बाजार में मालिक हो जाते, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कर लेते तो ये दुर्गति आज जो हो रही है इसमें सुधार होता। अब बाजार में मेरा सुझाव है प्रदेश सरकार एक राइडर रखे बाजार में एपीएमसी की मंडी का लाइसेंस। चौधरी साहब, मलिक जी को बोलने दीजिए, दो और पैनलिस्ट हैं, उनका भी नंबर आना है। बस एक बार मलिक जी बोलिए। मैं चौधरी साहब से इतना पूछता हूँ, जैसे इन्होंने अखबार में स्टेटमेंट दिया है, इनका छपा है कि हाँ, अगर कानून एमएसपी से कम कोई खरीदता है उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो आपने ये दिया है, बयान दिए हैं, और आप एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं है? आपने जो बस ठीक है मलिक साहब, आपने बोल दिया, बता दीजिए चौधरी साहब पक्ष में है कि नहीं, क्योंकि दो और पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाना है। बोलिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि बाजार में लोएस्ट कैप लगानी पड़ेगी किसान को बचाने के लिए, तभी किसान बचेगा। उसे जब तक आप बाजार की ताकतों से जब उसका भाव गिरता है तब तो बचाना जरूरी है, और उसके लिए वो A2+FL पर 50% जो है वो कैप होना चाहिए प्राइवेट बाजार का। पर चौधरी साहब इसमें ये भी कहेंगे, और वो प्रदेश सरकारों को लागू करना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहेंगे गोल पोस्ट मूव कर रहे हैं, पर चलिए कोई अगर उससे कम कोई खरीदता है तो आप मानते हैं? नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट है। मलिक जी, मैं वापस आऊंगी आप पे। कैन आई जस्ट ओपन द डिबेट? आई वांट टू गेट Yashuvardhan Azad as well as Ravindra Singh Sharon into this conversation. Yashuvardhan Azad, you know, there's so much that has been said, that has gone down in print, otherwise on social media, on how these farmers are going to come and make life miserable for those who live in Delhi. Away from all of that, yes, there could be, a possibility of a law and order situation. But having said that, on what is going on in the other side as well, with the kind of rubber bullets that are being used, tear gassing, lathi charge, it's unprecedented. Now, how do you walk that line where the excesses on the farmers are not too much, yet you draw that line? Is it even possible? Well, it's a very, very sensitive situation, Preeti. You realize that the police remembers very, very clearly what had happened on 26 January that particular year. Where there were direct clashes between the farmers and the police. Now, in that background, obviously there'll be abundance of caution on the part of the police. Yes, drones were used for tear gassing, and rubber bullets have been used. But tell me, on the farmers' side, when it was very well publicized that they were taking heavy equipment to break the barricades. They were having commando-like, units of 50 each to go through different areas to be able to encircle the particular place. They were stopping people, and they were on your channel only. There was this lady who had to go, and she was stopped, and she was virtually abusing the farmers. Tell me, in conditions like this,
how can you allow farmers to come? If the ministers are talking outside Delhi in Chandigarh, what is wrong with that? And, there is one thing which I must say, which is very, very relevant here, is that, making MSP legal is a demand which, even the earlier government for 10 years did not do it. So obviously you're asking for something which is impossible. So the question is, given the conditions like this, if you allow them inside, there will be mayhem in the capital and you cannot stop it. The only thing which I would suggest as a police officer is that, yes, if you have a delegation of farmers who can be brought into Delhi for talks in a particular place like Vigyan Bhaur or any particular area, that is fine. But to allow all of them, where will you get them? Will you get them in Ramlila Maidan? Will you give them in this particular place? That's what, Yashovardhan Azad, that is what they ask for permission. And usually, one would say that if permission was granted, then the rules of engagement would have also been charted out. That could have been that maybe tractors are not bought if, tractors have been an issue. That in buses, farmers could have been given passage to Ramlila Maidan and exercise their right to protest, Mr. Azad. I would really will not, go by this logic. For the simple reason that this has been tried many times, Preeti, it has just not worked. If you open one border, not only the tractors, everything will just move in and there'll be a kind of a siege. That's exactly the kind of protests and demonstration we've been having in Delhi. Forget the farmers, even the other delegations which are coming here. They lay siege. No one behaves in, what you're calling the rules of engagement. No side agrees with that. So I think government... I could turn around, Mr. Azad, because the rules of engagement have never been drawn. You've always blocked the borders and you've spoken from there. But, appreciate your point of view, sir. Especially as a police officer, you have a very strong one at that. But I want to also bring in at this point of time, before I come back to you again, Ravindra Singh Sharon. He's a senior journalist. He's tracked both situations where Haryana and Punjab is concerned. Ravindra ji, अभी जो स्थिति है और आगे जाते हुए आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है अभी तक एक कंटेन्ड है ये प्रोटेस्ट? अगर पंजाब की हम बात करें, आपको लगता है कि हरियाणा के जो जत्थे हैं, फार्मर्स हैं, अब जुड़ेंगे इससे? जी बिल्कुल प्रीति जी, नमस्कार। और बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है एंड हमने देखा था कि 13 महीने का भी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी वॉयलेंस नहीं हुई। यशोवर्धन साहब ने जिस तरह से कहा कि लाल किले की घटना का जिक्र किया, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उस पे जो ट्रायल चल रही थी उसमें कितने लोगों को अभी तक सजा दी गई है। देखिए, ये सब माहौल बनाने की चीजें हैं, माहौल को खराब करने की चीजें हैं। तो आज ही मैं देख रहा था, a press release has been sent by the Haryana police, and they have been claiming that they have been encircled with a parali and some red chili has been put in this, and that was very deadly. It could have damaged the health of many policemen. But they have not come up so far with any press release claiming that they have shot so many gas tear shells on the farmers. Why this kind of discrimination with the farmers? I don't understand. Dusra, what Krishna Birji has said that the markets, Krishna Birji, can you please elaborate how many countries have so far given access to the farmers of the market and how successful that model is? Markets and in the entire world has completely failed the farmers, and market, what is this subsidy? What is this intervention? What the farmers are demanding? They are only demanding that there should be some intervention. The market, when the market is open, the intervention from the government should be there. And government's intervention is already there in multiple fields. If you are going to the health sector, then the what is happening in the Sarkari hospitals, that is an intervention of the government in the form of subsidy. They are paying money for the poor person so that he can treat himself. Same is happening with the hospitals. And same is happening with the schools, because the poor people, they are not in this position to go to the private hospitals or to the private schools for the study or for the treatment. And there comes the role of government when they have to intervene in the form of subsidies. And this is what the MSP is, and this is what the farmers are demanding. So I think you please tell me how many countries are not giving the subsidies. The biggest economy in the entire world.
जो ये पत्रकार हैं शेरोन साहब, आपसे सवाल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कंट्री का नाम बता दीजिए जिसमें ये मार्केट फॉर्मूला सक्सेस हुआ है। नहीं, आप ये भी तो बताइए कि मैंने ये कब कहा है कि सरकार अपनी योजनाओं के लिए जो एमएसपी पे खरीद करती है वो बंद कर दी जानी चाहिए। मैंने ये कहा कि 2,28,000 का तो इस बार भी जो है जो उसमें जो खरीद की है एमएसपी पर, सरकार का इंटरवेंशन जो है वो इसीलिए तो है कि बाजार सुधरा रहे। और अब जो सरकार ने 5 फसलों को, जो दाल है, 3 दाल है और चौथा मक्का और 5वां कपास है, उसको जो कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए कि नेफेड आपकी फसल खरीदेगा और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन आपकी फसल खरीदेगा, वो इसीलिए तो करा है कि बाजार को संभाल के रखने के लिए मार्केट इंटरवेंशन के अलावा कर क्या सकती है सरकार, और उसके लिए सरकार फंडिंग करती है अपनी एजेंसी को। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आंसर करने दीजिए शेरोन, मिस्टर शेरोन, पहली सरकारों में और आज की सरकारों में कितना अंतर है? 1,06,000 का खरीदते थे पहले। जी रविंद्र सिंह शेरोन, प्लीज आंसर, then I'll take final closing comments from Mr. Malik and Choudhary Sahab, I still remember what has been said by the former agriculture minister and one of the staunch supporter of the farmers, the biggest, tallest farmer leader of this country, Choudhary Devilal. Once the farmers of this area, they have approached Choudhary Devilal when he was the agriculture minister of this country. And what they asked, Choudhary Sahab, you are now the agriculture minister of this country. And despite of that, हमारी जमीन आज भी घाटे का सौदा है. What did he say? He said, जब तक जमीन घाटे का सौदा है, तब तक किसान के पास सुरक्षित है. जिस दिन ये फायदे का सौदा होगी, आपके पास इस जमीन को कोई नहीं रहने देगा. So this is okay, I need to quickly get into a news break right now, which is coming in. Appreciate all 4 guests for joining us. Apologies, we couldn't come back to them, but news break coming in. A farmer leader, Swarn Singh Pandey, who's leading the agitation, says Chalo Delhi march has been postponed for 2 days. For tomorrow and the day after, farmers will disclose next course of action on Friday evening. So till Friday evening, there's a sort of ceasefire, one can say. The farmers have decided that they are going to deliberate for the next 2 days, and by Friday evening will inform of what will be their next course of action. That's the latest news break that is coming in. The farmers have decided to stall the protest for the next 2 days. There's a pause in the protest. They are going to deliberate possibly on the offer by the government of a 5th round of talks, or regrouping and consulting with other farm associations on what's the best way forward. But we will hear from them on Friday now, Friday evening it is. A quick break to stay with us. Taking the conversation further is going to be Rahul Gandhi. क्या छुपाना चाहती है ममता जी, और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? और मुझे सबसे तो तारीफ ने आश्चर्य हुआ है कि जो एसआईटी जा रही है, ममता जी ने बनाया, वो क्या सवाल पूछ रही है? आज कई अखबारों ने लिखा है उस पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बहुत सख्त है। इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड एब्यूज ऑफ वुमेन्स पर्सन, पूछताछ एक नॉर्म से होनी चाहिए। और एसआईटी पब्लिक में जाकर के एक ही सवाल पूछ रही है बार बार, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब वो सवाल कर रही हैं कि उनको और बेइज्जत कर रही हैं ताकि उनका मनोबल टूटे। Bengal leader of opposition Shubhendu Adhikari and CPM Politburo member Brinda Karat finally visit Sandesh Khali, a region marred by protest against alleged sexual violence against women and land grabbing. Adhikari, who was initially barred from entering the island, got access after the Calcutta High Court stepped in, permitting the visits by the opposition leaders.
Flanked by security officers and without supporters as directed by the court, Shubhendu Adhikari reached Sandesh Khali afternoon. Local residents greeted him with Vande Mataram and Jai Shri Ram chants. Women who have raised allegations of harassment shared their ordeal. पूरा एरिया को छानबीन कर देना चाहिए और पूरा एरिया में जितना शाहजहां और जितना गुंडा है पूरा हिरासत में लेना चाहिए. CPM leader Brinda Karat also visited Sandesh Khali. Criticism against the Mamata Banerjee-led state government has intensified, particularly regarding the inefficiency of the state police in apprehending Sheikh Shahjahan, the alleged mastermind behind the atrocities. The High Court, which allowed the visits, made scathing remarks at the Mamata Banerjee government and expressed surprise at prime accused and TMC leader Sheikh Shahjahan's continued evasion of arrest. The court said that the state government must not condone or support individuals who flout the law. Asserting that the one person can't hold all to ransom, the court has said it will ask Sheikh Shahjahan to surrender. Chief Minister Mamata Banerjee is unfazed. She has accused the BJP of exploiting the Sandesh Khali protest for political gains ahead of the Lok Sabha polls. Last week, making a statement in the assembly, Mamata has called Sheikh Shahjahan a victim. আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরে সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল. NCW chief who visited Sandesh Khali on Monday has blamed the local police for Sheikh's free run. With grave allegations including sexual harassment, money laundering and land grabs leveled against Sheikh Shahjahan, who remains at large for over 47 days. Sandesh Khali is fast becoming a blot on the law of enforcement agencies. Bureau Report, India Today. West Bengal police has not been able or has deliberately not arrested Sheikh Shahjahan till date. The investigations revealed murkier facts. It is unfortunate that Bengal, which is led by a women chief minister, is still protecting her proteges, has still not taken action against the goons, has not even condemned them, but is throwing the blame on the other leaders. प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी. इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है. अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है. और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है. मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में. मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है. मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है. अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी. साथियों, ये 370 की ताकत देखिए. 370 जाने के कारण आज
मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। Weather forecast now. Delhi, maximum 28 and minimum 13 degrees. Mumbai, maximum 28 and minimum 24 degrees. Kolkata, maximum 36 and minimum 21 degrees. Bangalore, maximum 32 and minimum 23 degrees. Chennai, maximum 31 and minimum 23 degrees. Hyderabad, maximum 34 and minimum 21